देखो जी, October November 2023, variant number 32. This is the year that we are currently doing, and this case is Calzado Killa CQ. If you remember, I guess अगर सारी क्लासेस फॉलो की हैं तो फिर तो ये तुम्हें केस अब तो याद होगा, है ना? केस याद है प्रॉपर? फ्रेडरिको ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2018 में. ही हैड आइडेंटिफाइड द गैप इन द मार्केट फॉर कंफर्टेबल फैशनेबल एंड सस्टेनेबल फुटवेयर, एंड ही वाज मेकिंग दीज शूज. He was previously working in some company, convinced the venture capital. After Federico had recruited an experienced management team, CQ was able to launch its innovative new shoe range in 2019. And the mission was to work towards carbon neutral production and product development, then marketing. Then we were planning to, in fact, we executed the idea of bringing the production in-house. कंट्री पी में हम लेकर आ गए थे प्रोडक्शन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी थी, उस पर भी एक सवाल किया था. और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी कुछ आ रहे हैं. फ्रेडरिको इज कंसर्न दैट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विल इम्पैक्ट सीक्यूज ग्रोथ. इकोनॉमिस्ट्स हैव फोरकास्टेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नंबर वन, डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्री पीस करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर. हमारी करेंसी एक्सचेंज डिप्रिशिएट होने लगा है. और इंक्रीज इन टैक्सेशन टू कंट्रोल द राइजिंग इन्फ्लेशन रेट. So these are the two economic changes that were happening. And then we had some numbers: inventory, non-current liabilities, capital employed, revenue 1.2, gross profit 0.8, and operating profit था हमारा 0.2. याद आ गया केस? ठीक है. हमने इसके क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 कर लिया था. लास्ट क्लास में हमने इसका क्वेश्चन 4 किया था. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्लान करके अटेम्प्ट करेंगे. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आई गेस. अच्छा सवाल है, मजे का सवाल है. चेक करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5. Evaluate the importance to CQ's future success of new product development. Evaluate the importance to CQ's future success of new product development. Let's say if we go for new product development, then uh, हाँ, लास्ट वाली क्लास भी मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे. हमारा जो बिजनेस बाय कुठारी का चैनल है, उस पर अगर तुम जाओगे तो प्लेलिस्ट्स के अंदर देखो, ये जो प्लेलिस्ट है ना, A2 लेवल पेपर 3. सो हाँ, इस वाली प्लेलिस्ट में जाओ. तुम्हें मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था लास्ट क्लास में भी, वो ये वाला देखो. ये रहा ना लास्ट जो नजर आ रहा है ना, क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व्ड. सो ये इसकी लास्ट क्लास है. एंड देन उसके बाद आज हम लास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 5. सो इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ टू सी क्यूज फ्यूचर सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इंट्रो में हम क्या डिफाइन करेंगे? चलो यार, चैट पे तुम्हें पार्टिसिपेटिव रहना है. ट्राई टू बी पार्टिसिपेटिव ऑन द चैट. ट्राई टू सेंड मैसेजेस पब्लिकली. इट्स बेटर फॉर द एंटायर क्लास. It's important to write your messages publicly. It's good. Okay. एनपीडी को या प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम डिफाइन करेंगे. बिल्कुल गुड. गुड पार्टिसिपेशन. मनाइम, इबाद, महाद, गुड. फिर हमारे पास दो मेन पैराज हमें बनाने हैं और एक हमें कंक्लूजन देना है. ठीक है. और ये पूछ रहा है कि जो हम लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट व्हेन if CQ wants to be future successful in the future basically. uh, Marketing analysis wala new product development is the responsibility of marketing department to come up with new products, to come up with new ideas. And ये mainly पूछ रहा है importance. Evaluate the importance to CQ's future success. So अब हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों पैराग्राफ्स में हम importance बता दें. पैरा 1 में कोई importance बताएं, पैरा 2 में भी importance बताएं कोई अच्छी, और फिर अपने ओपिनियन दें. और फिर जो नेगेटिव साइड है थोड़ी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से, फिर पैसे भी लगते हैं, रिस्क भी होता है उसमें फेलियर का. नेगेटिव साइड भी है उसकी, जाहिर है. दोनों साइड्स पर अगर मैं सोचना चाहूँ तो ज़्यादा बेहतर है. आइडियली मेरे ख्याल से मैं एक बताऊँ क्यों ज़रूरी होता है वैसे. वाई एनी वन बेनिफिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हाउ वुड बी इट बी इम्पोर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वैसे बिजनेसेस के लिए? ईजी है वैसे. एक बिजनेस जब नए प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है तो उसको क्या, new markets, definitely it can tap in new markets, it can target new customers with their new products. Risk diversification is also a very good point because I can just spread the risks of my business over the new products. So in case अगर एक आध प्रोडक्ट ना भी चले तो मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट होता है. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बड़ा अच्छा वर्ड है. आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइडन हो जाता है.
इससे आपका ब्रांड इमेज भी इम्प्रूव होता है, मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है, कंटिन्यूसली आप इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जा रहे होते हो, कस्टमर फैशन बड़ा चेंज हो रहा होता है तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हो। गुड यार। वी कैन टारगेट न्यू नीशेस, वाओ व्हाट अ पॉइंट, नाइस। आई थिंक हम एक लिख सकते हैं, इट गिव्स अ competitive edge because it just improves our brand name and कस्टमर एक्विजिशन हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम चाहें तो दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं चाहूँ तो इट विल स्प्रेड द रिस्क्स। दोनों पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंस के बनाए जा सकते हैं, लेकिन मर्जी है, हम चाहें तो एक साइड उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात करें कि ये उसकी इंपॉर्टेंस है, हाउ एवर it will be very costly and expensive process to come up with new products because you will have to invest on market research, you might have to invest on research and development, you will have to understand the market, you'll have to design it, develop the prototypes of it. So it's an expensive process. So I can write maybe a two-sided answer, and then in a conclusion, I'll have to tell my opinion. And what do you think? Opinion हमारा फेवर होगा, अगेंस्ट होगा कि क्या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीक्यू की फ्यूचर सक्सेस के लिए ज़रूरी है? येस और नो, व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो काम ही चलाना मुश्किल हो जाएगा। और एट द सेम टाइम कंक्लूजन में हमें जस्टिफाई करना होता है कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है क्यों ये ज़रूरी है कि हम नए प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस रखें अपना। इसका मतलब ये नहीं कि हम फौरन फौरन नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, जाहिर है हमारा फोकस है कि हम नए प्रोडक्ट्स के लिए सोचें। सो वाई, यस वाई, बिकॉज अब जब मुझे जस्टिफिकेशन देनी है तो वो मुझे ये भी पता है कि थोड़ी सिचुएशन से बात करनी होगी, एक्चुअल में सी क्यू की फ्यूचर सक्सेस की बात करनी होगी। So we will have to come up with something from the case, something from the situation where we could talk about, like, why do I feel like that? Yes, it is very, very important for the success of CQ. I'll have to actually be specific. I'll have to give my conclusion in context to the case, to the situation. I cannot just repeat the points के because brand improve हो जाएगा ना, situation के हिसाब से कुछ, क्यों न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों जरूरी है? क्या तुम्हें कॉन्टेक्स्ट से कुछ बातें मिलती हैं? अगर मैं कहता हूँ यस प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक यू, देन व्हाट इज द राइट जस्टिफिकेशन? व्हाई एम आई सेइंग इट? थिंक अबाउट इट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है, बट क्योंकि हमें मिला भी था फर्स्ट मूवर एडवांटेज 2019 में जब वो पहली दफा प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो दिस दिस प्रोडक्ट वाज समथिंग दैट गेव द एज टू द बिजनेस, राइट? सो आई थिंक 2019 में भी जब प्रोडक्ट डेवलप किया था तो दैट वाज अ थिंग दैट डिफरेंशिएटेड, दैट आल्सो इनकरेज द सेलिब्रिटी टू इंडोर्स। एंड जितना ज़्यादा फोकस रहोगे तो ये जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, है ना, एक इंटरेस्ट टैक्स रेट्स बढ़ने के सीन है इन्फ्लेशन की वजह से, तो उस टाइम में भी हमारे पास नए प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे हम फिर इन इकोनॉमिक चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सकेंगे ना। एक बिजनेस के नए प्रोडक्ट्स का माइंडसेट होगा कि अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस आ भी रहे हैं, सो वी शुड कम अप विद दोज प्रोडक्ट्स इन विच वी कैन काउंटर दोज economic perspective. Plus we are operating in the fashion sort of industry. The fashion just keeps on changing. Footwear एक बहुत ही फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, फैशन बड़ा फिट फाइनल चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि वी कैन जस्ट कीप आवर सेल्स अप टू डेट, राइट? चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यू शुड हैव योर आंसरिंग स्पेसेस आल्सो। और जब तुम लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आंसर्स अटेम्प्ट करते हो, तो मैंने बताया है कि तुम्हारे पास इसका प्रिंटेड फॉर्म होना चाहिए, ताकि जब तुम लिखो तो लाइंस पे लिखो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर अभी नहीं है लाइंस तो फिर नोटबुक पे, वरना फिर लाइंस जो है ना आंसरिंग, ये प्रिंट आउट्स निकाल लिया करो इन ईयर के, और फिर उस पर अटेम्प्ट किया करो। समझ लो।
So new product development is the process of designing, creating, and developing innovative products to increase the size of uh, product portfolio. Okay. NPD will be a very important NPD will be a very important element for the future success of CQ, as it will give a competitive edge the business will give a competitive edge to the business क्योंकि मार्केट में आपको competitive edge मिलता है. This is because पॉइंट स्टेट कर दिया. अब कौन सी टेक्निक आ रही है माइंड में बताओ. पॉइंट मैंने स्टेट कर दिया दैट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट विल गिव यू द competitive benefit, द competitive advantage. नाउ व्हाट इज द टेक्निक. आई हैव स्टेटेड माय पॉइंट. स्टेट हो गया है. अब BTL ना, बी का मतलब क्या है. BTL में बी का क्या मतलब हो गया. बिकॉज अब मुझे बताना है कि कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा. क्यों. क्योंकि हम शायद वो प्रोडक्ट्स ला सकते हैं जो शायद कंपेटिटर्स ने अभी तक सोचा भी नहीं था, या हम वो प्रोडक्ट्स ला सकते हैं जो मार्केट में अभी तक उसका गैप था. तो वो चीज़ जो शायद आपके कंपेटिटर्स के बाद आपको नहीं मिलेगी, जो हमारे पास मिलेगी, उससे हमारा प्रोडक्ट कुड जस्ट स्टैंड आउट, वी कुड डिफरेंशिएट. देयरफॉर इससे हमारा इमेज इंप्रूव होगा. देयरफॉर सेल्स एंड प्रॉफिट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज इफ CQ comes up with new products, then it will be able to retain customer interest, helping them to differentiate in the market. If we will differentiate in the market, if CQ comes up with new running shoes, then it will not only improve their market position, but will also encourage repeat sales. Therefore, focus on NPD can significantly help to attract new customers, leading to the maximization of sales. अभी करंटली सेल्स कितनी है हमारी. हमें सेल्स भी बताई हुई है ना.
अगर मैं सेल्स के बारे में लिख रहा हूँ कि जब हम नया प्रोडक्ट लाएंगे तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी और हम प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, सो आई कैन ऑल्सो रेफर टू द केस बिकॉज आई डू नो दैट द करंट रेवेन्यू इज लाइक 1.2 million and the current operating profits are 0.2. What my point is, let's say if I write these numbers, if I use these numbers in my answer, that the current revenue is 1.2 and this can be maximized, and the current operating profit is $0.2 million, which can also be increased. If I use these numbers in my answer, will that be counted as application? If I use these numbers in my answer, will those be counted as application? Yes, definitely yes. Definitely yes. Good. Okay. Wow, nice. Therefore, focus on NPD can significantly help to attract new customers, leading to the maximization of existing sales of $1.2 million. And the operating profits can also be increased, can also be increased from existing levels of $0.2 million. Of $0.2 million. ठीक है, देख लो। कॉपी कर लो फिर बता दो। कॉपी दिस डाउन, शाबाश। ठीक है जी, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। Focus on new product development will also have various challenges for seeking. Developing new products will be a very costly exercise. This is because focus on NPD will also have various challenges for CQ. Developing new products will be a very costly exercise. क्यों पैसे क्यों लगेंगे? This is because CQ will have to invest on market research and various internal prototypes will have to be made before one successful project launch. Various internal prototypes होते हैं जब आप samples बनाते हो. Whenever you come up with new products, you make samples, you make internal testing के लिए, आप उसकी quality checking के लिए internally पहले आप बनाओगे shoes. सही है? Will have to be made before one successful project launch. Therefore, CQ will have to arrange sufficient finance to fund new product development. The fact that gearing is currently 71%. कितनी परसेंट है? 71 ना? Gearing is currently 71%. Therefore, CQ will have to arrange sufficient finance to fund the new product development. The fact that gearing is currently 71% and the quality is declining for existing products
due to recent operational change of bringing production in-house. Focus on new product development immediately will therefore be a very challenging decision financially, and if at this point it fails, might lead to serious financial problems in the future. Might lead to serious financial problems in the फ्यूचर। देखो दोनों साइड्स लिख रहा हूं ताकि पूरा एक वेल बैलेंस्ड आंसर हो। दोनों पैराग्राफ्स में जो है वो इम्पोर्टेंस पे भी बना सकता था क्योंकि मेनली फोकस इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर आप टू साइड पे बात कर लेते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होती है। दैट इज मोर लेवल अप। ओके, I'm going to read it very fast now. So, just to summarize, new product development is the process of designing, creating, and developing innovative products to increase the size of the product portfolio. NPD will be a very important element for the future success of CQ as it will give a competitive edge to the business. This is because if CQ comes up with new products, then it will be able to retain customer interest, helping them to differentiate in the market. If CQ comes up with new running shoes, then it will not only improve the market position, but will also encourage repeat sales. Therefore, focusing on NPD can significantly help to attract new customers, leading to the maximization of existing sales of 1.2 million, and the operating profits can also be increased from the existing level of $0.2 million. Focus on NPD will also have various challenges for CQ. Developing new products will be a very costly exercise. This is because CQ will have to invest in market research and various internal prototypes will have to be made before one successful project launch. Therefore, CQ will have to arrange sufficient finance to fund new product development. The fact that gearing is currently 71% and the quality is declining for existing product due to recent operational changes changes of bringing production in-house. Focus on new product development. Focus on new product development immediately will therefore be a very challenging decision financially. And if at this point it fails, it might lead to serious financial problems in the future. फ्यूचर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट द फ्यूचर सक्सेस। ओके, कंक्लूजन लिख लेते हैं लास्ट। ओवरऑल, इन माय ओपिनियन, focus on new product development will be very essential for the future success of CQ. This is mainly because footwear is a very fast changing industry as the fashion sense changes, and coming up with new products will keep CQ updated in the market. There are
various economic challenges which are predicted, such as an increase in inflation, and therefore, in order to adapt, in order to adapt with this environmental change, NPT will play a very important role. The initial success was based on the fact, जगह कम पड़ गई है वैसे तो जो बात है, the initial success was based on the fact that CQ launched a very innovative shoe, and they will have to maintain this image, will have to maintain this image with their new product launches in the future. New product launches in the future. सही है जी। देखो जी, मैंने पूरा लिखवाता इसलिए हूँ ताकि तुम भी साथ साथ आंसर्स लिख लो। अब ऑब्वियसली मेरे जो आंसर्स हैं वो एज इट इज़ तुम्हारे आंसर्स नहीं हों। यू विल बी कमिंग अप विद अ वेरी डिफरेंट आंसर, यू मस्ट बी कमिंग अप विद वेरी डिफरेंट पॉइंट, एंड इट इज़ completely all right. And I write this entire answer, this takes a lot of energy, but I want to write it down for you guys because I want to make sure कि तुम्हारी भी राइटिंग स्किल्स इससे इम्प्रूव हों। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस ईयर का ख़त्म किया है, तुम ये कॉपी कर लो डेफिनेटली। एंड बस फिर अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे साथ में। कोई सवाल है तो पूछो।